Few years ago, Laurus Lab was known for one thing: APIs for HIV drugs. Today, it is trying to become something different by creating a high-margin global CDMO platform or contract manufacturing for pharmaceuticals. और यही बदलाव बताता है कि Laurus Lab शेयर्स की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा नीचे क्यों आई है। इस वीडियो में 4 स्लाइड के जरिए Laurus Lab का बिजनेस मॉडल, मार्जिन प्रोफाइल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन को आसान भाषा में समझेंगे। So let's first understand Laurus Labs business segments. Now number 1 is the APIs. So APIs are the active pharmaceutical ingredients. So let's understand what exactly is API to understand the Laurus business model. API को आप एक मेडिसिन का रॉ मटेरियल समझ सकते हैं। जैसे ब्रेड बनाने के लिए आटा जरूरी होता है, वैसी टैबलेट्स और इंजेक्शंस बनाने के लिए APIs जरूरी होते हैं। Laurus Lab ये APIs दुनिया भर की फार्मा कंपनीज को सप्लाई करता है। So you can see how important is this API business segment. So what is it? Like I said, it's a core chemical for medicines, for manufacturing medicines. Share of revenue today is around 38 to 40%. So 38 to 40% of the revenue of Laurus Lab is coming from APIs. कौन यूज करता है? Companies buy APIs especially for manufacturing HIV drugs. So ये इनका एक की सेगमेंट है जहां पर से ग्लोबल कंपनीज इनसे APIs लेती है। मार्केट क्या है? US, यूरोप एंड इमर्जिंग मार्केट। अब आते हैं फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशंस क्या होता है? फॉर्मुलेशन इज लाइक ए फिनिश प्रोडक्ट। सो बैकग्राउंड ये है कि समय के साथ लॉरस सिर्फ बल्क APIs तक की सीमित नहीं रहा, उसने धीरे धीरे हायर वैल्यू एडेड बिजनेस की तरफ फोकस किया, जैसे फॉर्मुलेशन और खास तौर पर CDMO। तो CDMO हम बाद में डिस्कस करेंगे और इन दोनों में मार्जिन जो है वो बेटर है APIs से। सो द सेकंड बिजनेस सेगमेंट जो है वो फॉर्मुलेशंस है। नाउ फाइनल मेडिसिन फॉर HIV। सो Laurus Lab जो फाइनल मेडिसिन है HIV की वो भी मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ APIs तो देता ही है और कंपनीज को, US, यूरोप एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, लेकिन वो खुद भी बनाता है पूरा HIV ड्रग। शेयर ऑफ रेवेन्यू अभी 30 से 34% के रेंज पे है। आई मीन दिस इज बेस्ड ऑन Q3 ऑफ FY26। कौन यूज करता है? ये अधिकतर गवर्नमेंट, ग्लोबल फार्मा कंपनी, तो ये डायरेक्ट सप्लाई करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स को एंड ऑल्सो ग्लोबल फार्मा कंपनी। मार्केट लाइक आई सेड इंडिया है, ओवरसीज मार्केट है लाइक US एंड यूरोप। नाउ अब आते हैं CDMO में। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट एंड दिस इज the new business with the company setting up. अभी जो रेवेन्यू है 23 से 25% है, but it is growing very fast. कौन यूज करता है? So ये बड़ी फार्मा कंपनीज के लिए है जहां CDMO सेगमेंट में कंपनी फोकस कर रही है। और लास्ट है R&D एंड न्यू टेक्नोलॉजी। So they are investing in future medicines here. Currently जो रेवेन्यू शेयर है वो 2 to 5% है and long term innovation for next gen drugs and यहाँ पर global relevance भी है। So अगर आप ये पूरा चार्ट देखें तो जो रेवेन्यू सेगमेंट है APIs 38 to 40%, it can go down to maybe 35 to 40 range. Formulation 30 to 34%, CDMO 20 to 25% and R&D new technologies 2 to 5%. So ये एक चार्ट बताता है कि पूरे रेवेन्यू कैसे डिवाइडेड है Laurus Lab। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे Laurus Lab की स्ट्रेटेजिक शिफ्ट and the margin profile of this business segment. Now if you look at APIs, the share of revenue जैसे हमने देखा था 38 to 40% है, पर अगर आप मार्जिन प्रोफाइल देखें तो EBITDA का हमने रेंज लिया है वो 12 से 18%। Now यहाँ पर मैनेजमेंट हैज नॉट गिवन एनी ब्रेकअप ऑफ different business segment in terms of EBITDA margin, but ये रेंज हमने based on market assessment करके लिया है। Now सेकंड है फॉर्मुलेशन और फिनिश मेडिसिन जो हमने पहले भी देखा था। शेयर ऑफ रेवेन्यू 30 to 34% है। यहाँ पर मार्जिन मिड रेंज में है 15 to 22%। सो इफ यू सी 12 से 18, यहाँ 15 से 22%। सो ट्रेडिशनली Laurus Lab APIs में था, बल्क APIs में था, बट इससे इन लो मार्जिन हाई वॉल्यूम बिजनेस द शिफ्ट हैपेंड टू formulation of the finished product where the margins are better. Now comes to CDMO, the third big segment which is very recent. 25%, 20-25% revenue share है। Margin अगर हम देखें very high, 25 to 30%. And clearly if you see why Laurus Lab is reducing dependence on APIs is very clear from the margin profile. And over the years APIs have become a very low margin business and it's very crowded also. So API though provides scale and cash, but CDMO and advanced manufacturing will provide growth, margins and the long term value. Now finally the R&D and the new age platforms 2 to 5%.
अभी नेगेटिव टू लो मार्जिन है, बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है और जो भी मोनेटाइजेशन होगा उसमें 5 साल 8 साल 10 साल भी लग सकते हैं. सो बेसिकली दो नए सेगमेंट है, फॉर्मुलेशन एंड फिनिश मेडिसिन एंड द सीडीएमओ. नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाई द लॉरस लैब शेयर प्राइस इज फॉलिंग एंड उसको समझने के लिए एक जैसे आपने देख लिया है कैसे मार्जिन जो डिफरेंट बिजनेस कैटेगरीज में है वो किस तरह से है, एंड अब हम जरा देखेंगे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, बिकॉज कंपनी इज इन द इन्वेस्टमेंट मोड एंड सेटिंग अप दिस न्यू बिजनेसेस एंड न्यू फैसिलिटीज. सो एक तरह से एक्सपेंसेस वहां ज्यादा बढ़ गए हैं. So let's understand the financial performance in the last 4-5 years. Now this is the chart of the financial performance of Laurus Labs, and we have made a comparison on sales, operating profit, OPM, interest, and net profit, and we have taken 5-6 years period from March. Now if you look at the sales and the sales growth, on the absolute number you will see a rise from 218,48,49 to 6041, then 6,722 to in 12 months trailing of 526. But if you see the sales growth, there is a huge jump in 2021, 70%. Then it fell to 2.5%, then it's 22%, then minus 16, and then again it fell to 10%, and now it's around 21%. So there is no sustained growth level in sales, and that probably because of the CDMO projects where you get a sudden order and the revenue spikes and the net profit goes up. But we have to look at at what level this growth will stabilize going forward. Now if you look at the operating profit and OPM margins, now margins are also not very stable. March 20 it was 20%, 21 it went up to 32%, then March 22 29%, 23 26%, then 24 it was around 15%, 25 19%, and then 12 months trailing is around 25%. So margin will also stabilize going forward, but we don't know at what level they will stabilize. Now this final chart is on the interest expense side because the company is in an investment mode. Absolute number 90, 68, 102, and if you see the interest expense is almost doubled in the last 5-6 years, and that shows that company is investing right now in the CDMO and the research and R&D. So that in a way has an impact on the profitability. Now over the last 5 years, if you see the ROCE, return on capital employed, that has declined, reflecting a phase of heavy reinvestment and margin normalization. ROCE has dropped from 40% to 9% in the last 5 years, while Laurus delivered 17 to 18% return on equity ROE over 10 to 5 year period. Recent returns, if you see, have softened to 11% over the last 3 years and 7% last year, reflecting an investment heavy phase. Now let's come to a very important slide on the valuation metric comparison. So here we have taken the P ratio, we have taken EV to EBITDA, we have taken price to book, we have taken market cap to sales. So 1, 2, 3, 4. So we have taken the 4 different parameters and studied them, one for the peak value, then the median value, then the current value, then the correction from the peak, and the premium or discount versus the median today. So first let's look at the P ratio. The peak value was 139.5. I think that was in 2024. The median comes out to be 93.2 times. Currently it is traded around 58x. So it is less than the median. अगर आप current P देखें around 58-60, so market has already cut expectation, because the earning normalization has happened and the capex phase is priced in. So that's why now the growth is not going to happen. So that's why they have corrected the PE to 58-60, which is less than median. So in this case it is good, but we are not making any recommendation here because this video is only for educational purposes. So correction from peak, if you see, is 58% down, 139 to 93. तो यहाँ अगर हम median value लें 93 and the current value 58, it is down 38%. Now if you take EV to EBITDA, peak में 42x था EV to EBITDA, median value 31 की है, current is 29x, so it's down from the median. So correction from the peak is 31% and it is down 9%
from the median value. In a way, it looks very favorable. So that also means the core operating business जो है is not overhyped. Market is cautiously optimistic. So ये एक healthy zone है and it's not very stretched here. Now come to price to book value. 12.5x peak में था. अभी median value इसकी जो median value है वो 5.9x है. Current value is 10.5x, so it's more than the median value. Correction from peak अगर देखें तो 16% है और अगर हम median से compare करें तो it is up. So that means balance sheet still priced at a growth premium, and market believes assets will earn higher return in future. But that will happen only when the ROCE will improve, because company's ROCE is down now. And if the ROCE improves, the book value parameter is a very good method to assess the valuation. Finally, market cap to sales. Peak में 9.5x था, median 5x है, अभी 7.8x है, तो median से higher है, अभी चल रहा है. Correction from peak देखें तो 18% less है, and median से, like I said, is 56% up. So ये जो एक caution है, because revenue still valued as a growth business. So top line acceleration is expected. So if sales don't scale, there is a downside risk. So to sum up, all these four methods, Laurus Lab has fully corrected on earning based valuation that we have seen based on the PE, partially corrected on cash flow valuation, that is EV to EBITDA, but still carries a balance sheet and revenue premium. So execution will decide the next leg of its growth in the share price. This stock is frequently tagged as a buy and long-term growth play because of its CDMO pivot and recovery in formulations. Many short-term technical trader also push this bullish setups and price targets online, reflecting active retail interest. So जैसा कि आपने देखा, Laurus Labs सोच समझकर अपनी पहचान बदल रहा है. एक वॉल्यूम लेड लो मार्जिन बल्क API बिजनेस से वो शिफ्ट कर रहा है high margin CDMO business की तरफ. But the big red flag is the profitability. And if you look at the ROCE and ROE, both are on a downward trajectory. So the big question is not whether the Laurus Lab is changing. What will ultimately matter is how well Laurus execute this plan. And just to make a disclaimer, in case you want to buy, sell and hold Laurus Lab stock, I suggest do consult your financial advisor.